Why is it that pickup has such a bad name? Why is that pickup Yeah. so looked down So, upon? bro, yeah, it's a couple of things, right? Hmm. First thing is because the thing is when you can do something, someone else can't do something, right? So it shows them a mirror of what you're not, and that really triggers you. So you want to put down the other person, right? वो एक basic defense mechanism भी आता है, and I felt that so much पहले, right? And anyway, human beings, just specifically Delhi में it's Yeah. like no, it's creepy to talk to random people, all right? Just stick with your people, all right? तो वो एक sense है दिल्ली में, Hmm. but then एक तो उससे आता है majorly, right? Secondly, जब when pickup had started out, right? So there were these concepts of negging and everything. All right. Mystery ने जब start करा था, VH1 pickup artist वगैरह था. So there like VH1 पे show है bro. So it's a very हाँ. polarizing thing. Some people like it, Yeah. some people don't like it. But the again, let's just cover this. So वहाँ पे ना certain concepts were there, negging and sort of दो तीन चीजें होती थी. Negging being the biggest one, where you sort of it's like कि you make the other person feel a little bit insecure by giving them a backhanded compliment, right? Okay. So let's say I really like your sweatshirt. So an example of a neg is going to be Vedant, bro, I love your sweatshirt. My grandmom has the same. I You're understand. getting it? Yeah. So Makes that's the sense. example. And Some people that call it people the felt is very push pull technique. मैंने कहीं सुना push है. pull, push pull. Push pull is something which is basically flirting, bro. That's how you flirt, right? Yeah, You that's how tease it and works. stuff. वो अलग है. But negging is something जो it's really looked down upon. It's not something that I want to do as well because you might end up pissing someone off, Of right? course. Plus, when you're a secure person, you wouldn't say things like that. जब तक तुम Of दोस्त course. नहीं हो अच्छे, ठीक है? हाँ. जैसे हम दोस्त हैं तो मैं बोलूंगा भाई मेरी दादी के पास भी सेम है, right? That's हाँ. human banter going on. So neg का भी concept was of the banter. Hmm. But when people started to do it कि दूसरी लड़की की self esteem गिराओ क्योंकि हम अपनी तो हाँ. बढ़ा नहीं सकते हैं, तो वो वहां से आते हैं और इसीलिए वो नेगेटिव नेम्स आ रहे थे उसमें. एंड देन ऑफ कोर्स देयर मस्ट हैव बीन अदर थिंग्स, काफी ज्यादा चीजें हैं. आधे टाइम लोग पहले परेशान हो जाते थे लाइक दीज पीपल आर सेइंग लुक्स एंड मनी डोंट मैटर, बट फिर हम बाहर जा रहे हैं हमें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, सो ये सब स्कैम है, तो आधा वो चलता है. At the same time, I've seen girls be like, so sometimes what happens, guys dating a girl, the guy finds out about pickup, and then he's like, I don't want to be in a relationship, I want to do this stuff, all Yeah, right, yeah. मुझे ये करना है. So women, so like some of the girls which I have met जो बोलते like मेरे को मैसेज आते like fucking asshole because of you my boyfriend broke up with me. I'm like मैंने क्या किया यार, मैंने क्या किया है, ठीक है, मैं दौड़ना गया था उस पे. So at the same time, like there have been enough girls who've been like, abhi recently this girl texted me. She's like, I'm dating my boyfriend for like the past 2 years, and he approached me randomly aise. And abhi I saw one of your podcasts with some other guy that I did, and she's like, thank you so much. Like, I mean, what you're doing, that's amazing. And had you not been there, so I mean, we wouldn't have met. So and that's always the goal of it, right? The intent is always there. But अब कोई बंदा उसको कैसे यूज कर रहा है क्या पता, bro. Like martial arts, bro. You're using it for self defense. You're using it for spiritual growth, or you're using it to murder someone. So it's not the Yeah. thing in general. It's how do you It's use how it, you right? use it. Enough people can use it to manipulate it into sex as well, right? But at the same time, हाँ ये भी बहुत बड़ी बात है. People think women don't like sex, all right? Specifically जो white knights होते हैं ना, simps. They think women don't like sex. तूने बोलता है किसी भी तरीके से अगर मैं जब बंदी से जाके बात कर रहा हूँ and we hook up or we end up having sex out of wedlock or even out of a relationship, मतलब मैंने manipulate करा ही होगा. लड़कियां दूध की धुली होती हैं, वो सेक्सुअल क्रीचर्स होती ही नहीं हैं. उनकी इज्जत सबसे प्यारी, खाली लड़की खुली तजोरी जैसी, अपनी इज्जत बचा के रखो, बस वही. So it comes from that place also, right? And the idea कि बंदों को virgin लड़कियां ही चाहिए, मैं क्या चूतिए लोग हो यार तुम. होते So हैं ना ऐसे लोग. I'm sure these people must हाँ come to you as हाँ well. नहीं, they don't come to me, bro. Like for me, nahin, bro. See, the people that come to me now directly, who like my clients now, I've started charging a decent amount. So only someone who has a decent job can come. So usually those are 70% of my clientele is either doctor or IIT, IIM graduate होके अच्छी सी company में है वहाँ पे. So those are those people who have missed out on all of the social and the dating scene growing up because they had to Growing up, study and they had yeah. to focus on other things. Yeah. Also, they were forced to buy into the lie कि जब तुम पैसे कमा लोगे ना तो बंदियां आ तुम्हारे पे जाएंगी. सोशल लाइफ आ जाएगी. Oh, this is such a big lie. ऊपर से Such a कहीं big से lie. उड़ती हुई आएंगी लड़कियां फरारी देखते ही, एक गाड़ी खरीदी उड़ती हुई आएंगी, ऑफिस में ऐसे आएंगी. बट रियलिटी क्या होती है, तुम Big इंजीनियर lie. हो, इंजीनियरिंग करके तुम कोडिंग वाली उसमें जा रहे हो अमेजोन वगैरह में, और वहां पे अगर तुम कोड कर रहे हो, कहीं पे भी तुम कोड कर रहे हो, ऑरेकल वगैरह में, वहां भी बंदे ही होते हैं क्योंकि इंजीनियर से वो बंदी वहीं होते जाते बोलते same. हैं बहनचोद Yeah. ये तो स्कैम है साला. ये तो बट scam स्कैम है. 20 साल बाद पता चला है, हाँ. राइट? तो वो भी होता है. एंड देन अगेन तूने वो पूछा ना व्हाई इज देयर अ नेगेटिव नेम फॉर इट. ओह या नेगेटिव नेम. तो if you're jumping on a lot of topics, that's what usually happens, right? um
So with the negative name, एक तो negging वगैरह वाला scene है, right? And then some people must have used it on like a bad thing, and then people उसके बाद फिर वो वही बन गया, किसी ने आर्टिकल लिख दिया, कुछ कर दिया, वाइस का तो काम ही है ये सारी चीजें करना, तो उन्होंने फैला दिया ये बुरा वो बुरा ये बुरा वो बुरा, और वो कर करके हो गया. But anyway, the reality now, and उस टाइम पे ना it was more about the lines and stuff. Lines रटो, जाके बोलो, ये 2-3 चीजें बोलो, और ऐसे ही बोलो, स्क्रिप्ट लेके चले जाते थे बंदे, ठीक है? तो ये बोलो और बंदी मिल जाएगी. And when you hear that, yeah, that's not how it works, but doesn't mean it didn't work like that also. It worked, right? Must have. It will get you the decent result. But the thing is, the women, they feel cheated. कि भाई ये तो natural नहीं है. I mean, of course. हाँ, because in their mind, like, you know, like people would want कि यार एक बंदा आया, naturally आया, मेरे को sweep me off my feet, charmed the fuck out of me और ले गया. But when they get to know कि वो plan करके आया था, हाँ, तो उन्हें लगता है that we're being cheated out of it. But again यार bro, तूने जिंदगी भर कोडिंग करी है, तुझे एल्गोरिथम्स ही पता है, तुझे बस पता है फ्लो चार्ट कैसे चलता है, तो तू वैसे ही लेके आएगा ना उसको. सो वही है. अब सो आई मीन दैट्स हाउ पीपल वांट टू डू इट. एंड शुरू में सब सारे नर्ड्स वगैरह होते थे, और जो नेगिंग का कॉन्सेप्ट आता था ना, ये दैट केम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ हेट, एज इन की मेरी स्कूल में बंदों ने ली है, पॉपुलर वाले, और मेरे को वो क्या बोलते हैं, और बंदियों ने मेरे को भाव नहीं दिए हैं, ठीक है? तो अब मैं उनकी इज्जत उतारूंगा और मेरे को बहुत अच्छा फील होएगा. तो नेगिंग और एक कॉन्सेप्ट होता है एमॉग का. एमॉग मतलब अल्फा मेल ऑफ द ग्रुप.